Good morning everyone. Today we will discuss about mechanism of 3,3-dimethyl-butanene with HBr. This is the structure of 3,3-dimethyl-butanene in which at third position two methyl groups are there. It means this is the structure of 3,3-dimethyl-butanene and we have to react this reactant with HBr. It means it is addition reaction and it will follow addition reaction mechanism. And one more thing, there is absence of light and absence of peroxide. It means it will follow Markovnikov rule. And in last video, we came to know what was the Markovnikov rule. According to the Markovnikov rule, this negative part of attacking reagent, it means Br negative, will attack to the multiple bonded carbon which has lesser number of hydrogen. Multiple bonded carbons are carbon number 1 and carbon number 2. And out of these, carbon 1 has 2 hydrogen and carbon 2 has 1 hydrogen. According to rule, Br negative must attach to the carbon number 2 and product must be like this. Okay, if we follow rule, it must be major product. But I am saying to you, it is not major, it is minor product. Now question arises, if it is minor product, then what would be the major product? तो major product होगा this one. This is major product. How this product comes out to be there? उसके लिए हमें जानना होगा 1,2-alkyl shift. In last video we came to know about 1,2-hydride shift and now today I will tell you about the 1,2-alkyl shift. And for this shifting we have to consider its mechanism. तो follow करते हैं mechanism. For mechanism again, because it is electrophilic addition reaction, that's why first step क्या होना चाहिए? Right. क्या होगा first step? It is the generation of electrophile. So step first is what? Generation of electrophile. कर देते हैं. HBr का ionization, it gives out H positive and Br negative. H positive, it is electron deficient species, it's mean electrophile, and electron rich species, it's mean nucleophile. So we have to attack electrophile on what? On alkene. Right, good. Now step 2. Step 2 is what? Attack of electrophile on alkene. और जब अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का एल्कीन पर तब क्या बनते हैं? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स. नाउ लुक एट दिस. If this pi electron moves to carbon number 1, then carbon number 1 will carry negative charge and carbon number 2 will carry positive charge, right? तो अब हमने इसे move करा दिया है. Now it becomes like this. Carbon number 2 will carry positive charge and carbon number 1 will carry negative charge. Now attack of electrophile, it means H positive, definitely H positive, and carbon negative, this negatively charged carbon will attack to this H positive, it means electrophile will attach to carbon number first. तो ये क्या स्पीशीज बन जाएगी? कुछ इस तरह से. क्या एक हमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नजर आ रहा है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और एक इंटरमीडिएट है, इट्स मीन एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ. नाउ डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इन दिस केस डिग्री इज 2. दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट. इफ आई did this shifting, it means 1,2-alkyl shifting, then what will happen? मैंने क्या किया? 1,2-alkyl shift कर दिया. अल्काइल क्या है ग्रुप यहाँ पर? मिथाइल. इट मीन्स CH3 नेगेटिव. मिथाइल शिफ्ट किया. अगर मैं 1,2-alkyl शिफ्ट और इट्स मीन 1,2 मिथाइल शिफ्ट करती हूँ तो ये CH3 नेगेटिव इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा. नाउ दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो कुछ कंडीशंस इस तरह से बन जाएंगी.
क्या किया है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू अनदर कार्बन मीन्स सेकेंड कार्बन. दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल, राइट. तो यहाँ पर 1,2 एल्काइल शिफ्ट करने पर दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. नाउ लुक एट द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन. इट मीन्स इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन. कैसे देखते हैं डिग्री, जब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है यहाँ पर मीन्स दिस कार्बन से कितने अदर कार्बन अटैच्ड हैं, 3 अदर कार्बन अटैच्ड हैं. इट्स मीन इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन. नाउ यू नो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन. अब मुझे ये बताने की नीड नहीं है. तो आउट ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, डेफिनेटली 3 डिग्री. 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल. और जो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वो वही मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा. इट मीन्स मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन. नाउ स्टेप थर्ड इज attack of nucleophile. And what is nucleophile? Br negative, and Br negative will attack on 3 degree carbocation intermediate. It will also can attack to the 2 degree carbocation intermediate, but this product will be minor one and this product will be major one. मतलब product formed by this intermediate will be major one. Now look at this, the product अटैक करा दिया Br नेगेटिव एंड इट गिव्स आउट CH3, CBr, CH3, CH, CH3, CH3. This is final major product. And what would be its name? कर लेते हैं. Numbering 2-bromo, 2,3-dimethyl butane. And what its name? 2-bromo, 2,3-dimethyl butane, right? So it was the mechanism of 3,3-dimethyl butane with HBr, and it follow 1,2 alkyl shift. And this is major product and this one is minor product. And how it is major and how it is minor, you came to know about it by following mechanism, and this is its mechanism. In next video we will talk about next topic. Till then, goodbye.